Hello students, welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today we are going to learn chapter 12 Kalikala Sarvagno Hemchandracharya. Hemchandracharya, the omniscient one in Kali Yuga. हमने देखा था कि हेमचंद्राचार्य जो कि कलयुग में कलिकाल सर्वज्ञ ऑल नोइंग पर्सन जो सब जानने वाले हैं, ऐसे हेमचंद्राचार्य जी है जिसको कलिकाल सर्वज्ञ ऐसी उपाधि दी गई है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हेमचंद्राचार्य जी जिसका जन्म धंधुका गांव में हुआ है और पाहिनी देवी और चांचदेव और पाहिनी देवी, उसके पिता चांचदेव और पाहिनी देवी उसकी माता का नाम है, और चांगदेव उसका मूल नाम चांगदेव है जन्म से। फिर उसका नाम सोमचंद्र, उसको जब दीक्षा दी गई तब सोमचंद्र नाम था, लेकिन उसके गुणों के आधार पर उसको आचार्य की पदवी दी गई और हेमचंद्राचार्य ऐसा नाम हेमचंद्राचार्य जी को दिया गया। फिर सिद्धराज जयसी जो है पाटन में, वह देवचंद्र सूरी जी उसके गुरु जो है, उसका देहावसान बाद में वह पाटन में गए हेमचंद्राचार्य जी, और तब सिद्धराज जयसी जो है वह भी वहाँ के राजा थे, और तब उसने हेमचंद्राचार्य जी को रिक्वेस्ट की कि इस तरह से एक व्याकरण ग्रंथ रचा जाए, और फिर व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई है। हमने देखा था, एक बार हम ट्रांसलेशन देख ले। सिद्धराज जयसी conquered Malav in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jayasingh returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library there were many incomparable treatises. Among them one was also Bhoj Vyakran, famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secure the ownership of the wealth by conquering Malav. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by his Bhoj Vyakranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one work of grammar like Bhoj Vyakranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. हमने देखा था कि सिद्धराज जयसी जो है वह यशोवर्म को जीत कर आ जाते हैं, उसका सब धन लेकर वह वापिस आते हैं। तभी भोज राजा के दरबार में जो ग्रंथागार होता है वह ग्रंथागार भी वह साथ में लेकर आते हैं, और उसमें भोज व्याकरण नाम का, सरस्वती कंठाभरण नाम का ग्रंथ देखते हैं, और वह सोचते हैं कि भोज की जैसी कीर्ति है। भोज की कीर्ति किससे है? तो उसके ज्ञान को लेकर उसकी कीर्ति और प्रसिद्धि है। भोज व्याकरण जो है सरस्वती कंठाभरण, उससे उसकी प्रसिद्धि है। तो ऐसी प्रसिद्धि मेरी भी हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। इसलिए हेमचंद्राचार्य जी के पास आते हैं,
उसको निवेदन करते हैं कि हे आचार्य श्रेष्ठ, आप भी ऐसी कुछ रचना करें और जिससे मेरी और आपकी कीर्ति अमर हो जावे। आगे, सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः एकम् अपूर्वं व्याकरणग्रंथं रचितवन्तः। रचितवन्तः जो है वह कर्तरीभूत कृदंत का क्रियापद है। कहते हैं कि सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन, prompted by the request of Siddharaj Jayasingh, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः, इंस्पायर्ड, prompted, प्रेरिताः, इंस्पायर्ड बाय सिद्धराज जयसिंह, इसलिए यहाँ पे हेमचंद प्रेरिताः ऐसा कहा गया है। व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः, कंपोज्ड, prompted by the request of Siddharaj Jayasingh, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. सह सिद्ध हेम व्याकरणम नामना प्रसिद्धः अस्ति। सह सिद्ध हेम व्याकरणम नामना प्रसिद्धः अस्ति। The treatise is famous by the name Siddh Hem Vyakaranam. The treatise is famous by Siddh Hem Vyakaranam. Prompted by the request of Siddharaj Jayasingh, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. The treatise is famous by the name सिद्ध हेम व्याकरणम। उसका नाम सिद्ध हेम व्याकरण ऐसा रखा गया। हेम से हेमचंद्राचार्य और सिद्ध से सिद्धराज जयसिंह, और इस तरह से सिद्ध हेम ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् अष्टो अध्यायाः सन्ति। जिस तरह से चैप्टर्स होते हैं उस तरह से उसमें अध्याय है। फर्स्ट अध्याय, सेकंड अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इस तरह से होता है। इस तरह से उसमें अध्याय है। सो इन दिस सिद्ध है, इन दिस देयर आर 8 चैप्टर्स। तेषु प्रारंभिकेषु 6 अध्यायेषु संस्कृत भाषायाः अन्तिमयोः 2 अध्याययोः प्राकृतभाषाणां च व्याकरणमप्यस्ति। Among them, in the first 6 chapters, there is the grammar of Sanskrit language. 8 अध्याय, उसमें 6 चैप्टर्स, 6 अध्याय में संस्कृत का ग्रामर दिया गया है। और एंड इन द लास्ट 2 चैप्टर्स, अंतिम 2 अध्याय में प्राकृत भाषाणां च देयर इज ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज आल्सो। प्राकृत मीन्स संस्कृत ही है। जिस तरह से मिच्छामि दुक्कड़म, वह संस्कृत में है दुष्कृतम मा इच्छामि, तो उसका प्राकृत भाषा क्या हो गया? मिच्छामि दुक्कड़म, कि मैं किसी का भी दुष्कृतम, खराब नहीं इच्छता हूँ, सभी के अच्छा ही इच्छता हूँ। किसी का भी कभी कुछ खराब न हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना उसमें है। मिच्छामि दुक्कड़म, तो वह संस्कृत में दुष्कृतम मा इच्छामि ऐसा है, और प्राकृत भाषा में मिच्छामि दुक्कड़म। तो इस तरह से संस्कृत और प्राकृत भाषा दोनों में
फर्क है। तो प्राकृत भाषा जो है, जो जैन धर्म में प्रयोग की जाती है, तो वो प्राकृत भाषा का भी 2 अध्याय में, 2 चैप्टर में व्याकरण दिया गया है। Among them, in the first 6 chapters, there is grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit language also. Prompted by the request of Siddharaj Jaisi, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. The treatise is famous by the name Siddhaim Vyakaranam. In this, there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapters, there is the grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit language also. Prompted by the request of Siddharaj Jaisi, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. The treatise is famous by the name Siddhaim Vyakaranam. In this, there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapters, there is the grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit language also. Siddharaj Jaisi conquered Malav in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhojvyakran, a work on grammar, famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malav. I also got their library. But the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one work of grammar, like Bhoj Vyakranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Prompted by the request of Siddharaj Jaisi, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. The treatise is famous by the name Siddhaim Vyakaranam. In this, there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapters, there is the grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit languages also. हेमचंद्राचार्यैः लक्ष्य श्लोक परिमितं साहित्यं विरचितम् अस्ति. हेमचंद्राचार्यैः लक्ष्य श्लोक परिमितम्. Literature consisting of 1 lakh shloks, verses of 2 or 4 lines, has been composed by Acharya Hemchandra.
Literature consisting of 1 lakh श्लोक्स has been composed by हेमचंद्र। हेमचंद्राचार्य जी ने 1 लाख श्लोक, कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक जितना साहित्य की रचना की होगी। एक श्लोक यानी आपको पता ही है, जब पद्य आता है उसमें एक श्लोक होता है। तो जैसे सुभाषित में 7 श्लोक थे, तो एक 4 लाइन का एक श्लोक होता है। ऐसे 1 लाख श्लोक का साहित्य हेमचंद्राचार्य जी ने रचा था, तो कितनी विद्वत्ता होगी। लिटरेचर consisting of 1 lakh श्लोक्स has been composed by आचार्य हेमचंद्र। अस्मिन् साहित्ये अभिधान चिंतामणिः नामकः कोशग्रन्थः। अस्मिन् साहित्ये अभिधान चिंतामणिः नामः कोशग्रन्थः। In this literature, a dictionary named अभिधान चिंतामणि, संस्कृत के एक प्रकार का शब्दकोश, पूरा शब्दकोश तो कब लिख सकते हैं कि इतने शब्दों का अभ्यास किया गया हो। कोई भी भाषा को जानने लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वोकेब्युलरी, शब्दकोश, वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जानना जरूरी है। तो पूरा शब्दकोश ही रचा है जिसने, इसलिए कहते हैं कि इन दिस लिटरेचर अ डिक्शनरी नेम्ड अभिधान चिंतामणि चालुक्य वंशोत्कीर्तनम नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबद्धम द्व्याश्रयम महाकाव्यम। An epic poem composed in Sanskrit and Prakrit, having twofold aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshotकीर्तनम। चालुक्य वंशोत्कीर्तनम नाम का द्व्याश्रयी महाकाव्य। देखो, प्राकृत और संस्कृत दोनों में ये रचा गया है। इसमें प्राकृत भाषा भी दी गई और संस्कृत भाषा भी दी गई। और किस तरह से एक श्लोक में साहित्य है, कुछ कथा वस्तु दी गई है चालुक्य वंश की, कि भाई सिद्धराज जयसी थे, उसके कुमारपाल उसके वंश में हुए, तो ऐसे उसकी कथा दी गई है। और एक में व्याकरण के उदाहरण दिए गए हैं, जो व्याकरण हम पढ़ रहे हैं उसके ही उदाहरण है कि यह है तो ऐसे संधि होती है, ऐसे कृदंत होता है, ऐसे ये होता है। तो एक एक श्लोक में व्याकरण के उदाहरण, एक में कथा वस्तु चलती है एक श्लोक में। तो इस तरह से दोनों एक साथ है, इसलिए इसको द्व्याश्रयी महाकाव्य कहा गया है, चालुक्य वंशोत्कीर्तन। इसलिए एन एपिक पोएम composed in Sanskrit and Prakrit, having twofold aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshotkeertanam. काव्यानुशासनम नामकः अलंकार शास्त्रीयः ग्रंथः। A book on poetics named Kavyanuशासनम and Chandonuशासनम, a work on prosody, are included. काव्यानुशासन नाम का एक पोएटिक्स ग्रंथ है, जिसमें काव्य की रचना किस तरह से की जानी चाहिए, उसके जो नियम हैं, उसके जो रूल्स है, वह सब काव्यानुशासन में दिए गए हैं। अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, जो कि छंद है, किसी भी श्लोक की रचना, आपको गुजराती में आप छंद पढ़ते हैं तो छंद आते हैं आपको, तो किस तरह से उसके नियम होते हैं कि एक जो पद होता है, चरण होता है, उसमें 10 ही अक्षर होने चाहिए, दूसरा पद होता है उसमें 10 ही अक्षर होना चाहिए। तो इस तरह से किस तरह से वो नियम जो है, छंद जो है, उसका
एक ग्रंथ लिखा है छंदोनुशासनम। लिटरेचर consisting of 1 lakh shloks has been composed by Acharya Hemchandra. In this literature, a dictionary named Abhidhan Chintamani, an epic poem composed in Sanskrit and Prakrit, having twofold aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshottkirtanam, a book on poetics named Kavyanushasanam and Chandonushasanam, a work on prosody, are included. Literature consisting of 1 lakh shloks has been composed by Acharya Hemchandra. In this literature, a dictionary named Abhidhan Chintamani, an epic poem composed in Sanskrit and Prakrit having twofold aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshottkirtanam, a book on poetics named Kavyanushasanam and Chandonushasanam, a work on prosody, are included. Literature consisting of 1 lakh shloks has been composed by Acharya Hemchandra. In this literature, a dictionary named Abhidhana Chintamani, an epic poem composed in Sanskrit and Prakrit having twofold aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshottkirtanam, a book on poetics named Kavyanushasanam and Chandonushasanam, a work on prosody, are included. Siddharaj Jaisi conquered Malav in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhoj Vyakran, a work on grammar, famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secure the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library. But the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one work of grammar like Bhoj Vyakranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Prompted by the request of Siddharaj Jaisi, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. The treatise is famous by the name Siddhaim Vyakranam. In this, there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapters, there is the grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit languages also.
Literature consisting of 1 lakh shloks has been composed by Acharya Hemchandra. In this literature, a dictionary named Abhidhan Chintamani, an epic poem composed in Sanskrit and Prakrit having twofold aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshottkirtanam, a book on poetics named Kavyanushasanam and Chandonushasanam, a work on prosody, are included. गुर्जर प्रदेशे लब्धजनिः अयं हेमचन्द्राचार्यः न केवलं गुर्जर प्रान्तेऽपि तु समग्रेऽपि संस्कृत साहित्य आकाशे सूर्यवत् प्रकाशते. गुर्जर प्रदेशे लब्धजनिः, the Hemchandracharya, born in the region of Gujarat, continues to shine very brightly like the sun, not only in Gujarat. सिर्फ गुजरात में ही नहीं कि जैसा हेमचंद्राचार्य है उसने इतनी सारी रचना की तो वह गुजरात में ही प्रसिद्ध थे, ऐसा नहीं था. संपूर्ण संस्कृत साहित्य आकाश कि जहाँ भी संस्कृत साहित्य की बात हो तो हेमचंद्राचार्य जी की वहाँ पे जिक्र, हेमचंद्राचार्य जी का जिक्र होता ही है. आज भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जिसने हेमचंद्राचार्य जी और हेमचंद्राचार्य जी का जो भी साहित्य है, लिटरेचर है, उस पर पीएचडी किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ भी है और रिसर्च कर भी रहे हैं. दिस हेमचंद्राचार्य, born in the region of Gujarat, continues to shine very brightly like the sun, not only in Gujarat but also in the sky, in the form of the whole Sanskrit literature. कि पूरे संस्कृत साहित्य के आकाश में वह सूर्य की जैसे प्रकाशमान है. शाइन वेरी ब्राइटली लाइक द सन, नॉट ओनली इन गुजरात, कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं लेकिन संस्कृत साहित्य की जहाँ भी बात हो तो वहाँ पे हेमचंद्राचार्य जी को याद किया ही जाता है. तो इस तरह से हेमचंद्राचार्य जो है वह सिद्धराज जयसी जो है हेमचंद्राचार्य जी के पास चाहते हैं उसको भोज व्याकरण के जैसा व्याकरण बनाने के लिए निवेदन करते हैं और उस निवेदन का स्वीकार करके वह सिद्ध हेम व्याकरणम, जिसको सिद्ध हेम शब्दानुशासनम ऐसे नाम से भी जाना जाता है, वह व्याकरण ग्रंथ की रचना करते हैं. और उस व्याकरण ग्रंथ को हाथी के पर रखकर सम्मान दिया जाता है, पूरे पाटन में घुमाया जाता है और पाटन के लोग वह पढ़े, यह भी सुनिश्चित किया जाता है. पाटन के लोग को पढ़ने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और सभी बच्चों को सिद्धराज जयसी पढ़ाते हैं. तो नाउ कंप्लीट द चैप्टर वन टाइम, रिसाइट द ट्रांसलेशन only English. Siddharaj Jayasingh conquered Malav in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jayasingh returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library there were many incomparable treatises. Among them one was also Bhoj Vyakaran, a work on grammar, famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Once Siddharaj started thinking. He thought, I secured
the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by his treatise Bhoj Vyakaranam has not. Bhoj Vyakaranam has not been won by me, so I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one work of grammar like Bhoj Vyakaranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Prompted by the request of Siddharaj Jaisi, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. The treatise is famous by the name Siddhem Vyakaranam. In this, there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapters, there is the grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit language also. Literature consisting of 1 lakh shloks has been composed by Acharya Hemchandra. In this literature, a dictionary named Abhidhan Chintamani, an epic poem composed in Sanskrit and Prakrit having twofold aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshotkirtanam, a book on poetics named Kavyanushasanam and Chandonushasanam, a work on prosody, are included. This Hemchandracharya, born in the region of Gujarat, continues to shine very brightly like the sun, not only in Gujarat but also in the sky in the form of the whole Sanskrit literature. Now, the exercise. एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरतः जयसिंहः कं नृपतिं पराजितवान्. Answer is Siddharajah Jayasiंहः यशोवर्मणं नृपतिं पराजितवान्. जयसिंहः यशोवर्मणं नृपतिं पराजितवान्. किस राजा को हराया था? तो यशोवर्म नाम का जो राजा था उसको हराया था. भोजेन विरचितं व्याकरणं केन नामना प्रसिद्धमस्ति. भोजेन विरचितं व्याकरणं केन नामना प्रसिद्धमस्ति. भोजेन विरचितं व्याकरणं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धमस्ति. भोजेन विरचितं व्याकरणं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम् अस्ति. कस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः. किसके निवेदन से प्रेरित हुए? तो सिद्धराजः जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः एकम् अपूर्वं व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः. सिद्धराजः जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः एकम् अपूर्वं व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः. सिद्धहेम व्याकरणस्य 6 अध्यायेषु कस्य व्याकरणं वर्तते? सिद्धहेम व्याकरणस्य 6 अध्यायेषु संस्कृतस्य व्याकरणं वर्तते. सिद्धहेम व्याकरणस्य 6 अध्यायेषु संस्कृतस्य व्याकरणं वर्तते. हेमचंद्राचार्येण
रचितस्य अलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति? हेमचन्द्राचार्येण रचितस्य अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थस्य नाम काव्यानुशासनम् अस्ति। रिपीट। जयसिंहः कं नृपतिं पराजितवान्? सिद्धराजः जयसिंहः यशोवर्मणं नृपतिं पराजितवान्। भोजेन विरचितं व्याकरणं केन नाम्ना प्रसिद्धमस्ति? भोजेन विरचितं व्याकरणं सरस्वतीकण्ठाभरणनाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। कस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचन्द्राचार्याः व्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः? सिद्धराजः जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचन्द्राचार्याः एकम् अपूर्वं व्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः। सिद्धहेमव्याकरणस्य 6 अध्यायेषु कस्य व्याकरणं वर्तते? सिद्धहेमव्याकरणस्य 6 अध्यायेषु संस्कृतस्य व्याकरणं वर्तते। हेमचन्द्राचार्येण रचितस्य अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थस्य नाम किमस्ति? हेमचन्द्राचार्येण रचितस्य अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थस्य नाम काव्यानुशासनम् अस्ति। प्रश्नानाम् आङ्ग्लभाषायाम् उत्तराणि लिखत। When did Siddharaj Jayasingh get victory over Malo? Siddharaj Jayasingh got victory over Malo in the 12th century of Vikram era. What did Jayasingh achieve by getting victory over Malo? Jayasingh got King Yashovarma wealth and his whole library by getting victory over Malo. On account of what did Bhoj earn fame? Bhoj became famous because he wrote a treatise called Saraswati Kanthabharan, which was a work on grammar. What is the proportion of literature composed by Hemchandracharya? Literature composed by Hemchandracharya consists of 1,00,000 verses. 1,00,000 जितना श्लोक का साहित्य हेमचंद्राचार्य जी ने रचा हुआ है। नाउ संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट। Hemchandracharya was born in village named Dhandhuka in the district Ahmedabad in 1145 of the era started by Vikramaditya. He was given the name Changdev by his parents. और पेरेंट्स का नाम भी आप लिख सकते हैं, पाहिणी देवी और चांच देव उसके पिता थे और पाहिणी देवी उसकी माता का नाम था। Named Changdev by his parents. When he was ordained as an acharya preceptor of Shwetambar sect of Jainism, he was given the name Hemchandracharya. He was a prolific writer and wrote on variety of subjects. Siddharaj Jayasingh. Siddharaj Jayasingh was a king of Chalukya dynasty who ruled Gujarat. He defeated King Bhoj and Malo, but they wanted to make Gujarat the center of learning like Malwa, so he requested Hemchandracharya to compose a treatise on grammar like the one composed by King Bhoj. Bhoj Vyakaranam. Siddharaj Jayasingh conquered the kingdom of Malo in 12th century of the era of Vikramaditya. Taking all the wealth of Yashovarma, he returned to Anhilpur. Along with wealth,
He had also brought the collection of books in which a treatise on grammar composed by King Bhoj was also there. It was called Saraswati Kanthabharan and popularly known as भोज व्याकरणम. सरस्वती कंठाभरण जो कि भोज व्याकरण से प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन उसका नाम तो सरस्वती कंठाभरण ऐसा ही था. नाउ कंप्लीट द चैप्टर 12. होमवर्क में आपको आज जितने पैराग्राफ ट्रांसलेशन के पढ़ाए और जो भी एक्सरसाइज है एक बार पूरा आपको लिखना है. 3 पैराग्राफ हमने ट्रांसलेशन पढ़े और बाकी का ये, तो एक बार पूरा आपको होमवर्क में लिखना है. थैंक यू वेरी मच.